don't know, we're the only couple who doesn't have kids yet, which is why I'm excited to make this announcement. Sorry, babe. Nick and I are expecting. Surprise announcement posted to social media. Nick and Priyanka posted matching statements to their Instagram pages reading, "We are overjoyed to confirm that we have welcomed a baby via surrogate." आज की वीडियो में हम प्रियंका चोपड़ा की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, यह जानने के लिए कि उनका बच्चा सरोगेसी के माध्यम से क्यों पैदा हुआ। पर इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आप इस वीडियो में जो भी सुनेंगे या देखेंगे वो किसी भी तरीके से उनकी निंदा या उनको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बनाई गई है। हर माँ अपने बच्चे को जिस भी तरीके से इस दुनिया में लाना चाहें वो उनका निर्णय है और हर औरत का मातृत्व का सफर एक जैसा नहीं हो सकता है, पर हर माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए एक स्वरूप है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगी कि अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करते हैं तो उसको प्लीज सकारात्मक रखें। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी आपके निरंतर सहयोग के लिए और आपसे विनती करूंगी कि अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहिए सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। अब बढ़ते हैं प्रियंका चोपड़ा की कुंडली के विश्लेषण की ओर। सबसे पहले उनकी लग्न कुंडली का विश्लेषण करते हुए हम उनके 5वें घर को देखेंगे, क्योंकि 5वां घर ज्योतिष में आपके बच्चों के बारे में बताता है। उनके 5वें घर में 2 ग्रहों की युति है जो हैं शनि और मंगल। अब ज्योतिष के सिद्धांतों से शनि और मंगल की युति को गुणकारी नहीं माना जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि शनि उत्तेजित हो जाते हैं जब उन पर मंगल का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि शनि मेष राशि में, जिसको मंगल रूल करते हैं, दुर्लभ स्थिति उत्पन्न करता है। शनि ग्रह की विशेषता यही है कि वो कुंडली में जिस भी भाव में विराजमान होते हैं वहां आपको चुनौतियों और कष्ट का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि प्रियंका की कुंडली में यह 5वें घर या भाव में है, इससे ये जाहिर होता है कि उनके लिए प्राकृतिक रूप से अपने बच्चे को पैदा करना मुश्किल हो सकता है या ऐसे करने में उनकी उम्र की वजह से उलझन आ सकती है, क्योंकि शनि ग्रह 36 इयर्स की एज में परिपक्व या मैच्योर होके अपने कष्ट कम करते हैं। इस चुनौती की पुष्टि करने के लिए उनके नवांश कुंडली को परखना अनिवार्य है। उनकी नवांश कुंडली के 5वें भाव में फिर शनि स्थापित हैं, पर इस बार सूर्य के साथ युति बनाकर। फिर से ये दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ युति में गुणकारी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार सूर्य महाराज की पत्नी अपना दोहरा रूप छाया बनाकर शनि को जन्म देती हैं, पर शनि के अपने पिता सूर्य के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। तो शनि और सूर्य की युति उनकी नवांश कुंडली के 5वें भाव में फिर से उनकी प्राकृतिक तरीके से मां बनने की क्षमता को आसानी से पूरा नहीं करता है। अब दोनों लग्न और नवांश कुंडली में बच्चे के जन्म को लेकर बाधाएं हैं, पर ये सवाल उठता है कि वो चाहे सरोगेसी के माध्यम से ही क्यों ना हो, पर माँ कैसी बन पाई। इसको समझने के लिए हमें उनकी कुंडली के लग्न को परखना है। प्रियंका का लग्न वृषभ राशि है और उनके लिए शनि ग्रह योग कारक है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की राशियां जो मकर और कुंभ है वो उनके 9वें और 10वें घर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, शनि त्रिकोण और केंद्र दोनों घरों में होकर उनकी विशेष कुंडली में फिर एक त्रिकोण घर जो कि 5वां भाव है उसमें विराजमान है। ये बहुत ही अच्छा योग बनाता है जो उनके मां बनने के लिए अनुकूल है। एक और चीज वो ये है कि उनके 5वें भाव में कन्या राशि है जो रोग, ऋण और शत्रु दिखाता है। न्यूज के अनुसार कहा जा रहा है कि दुर्भाग्यवश उनके बच्चे का जन्म 9 महीने पूरे होने से पहले हुआ है, जिसकी वजह से उनका बच्चा अभी अस्पताल में है। इस सभी जानकारी
का पूर्ण प्रमाण हमें उनकी दशा को देखकर समझ आता है, क्योंकि वो अभी अपनी बृहस्पति की महादशा से गुजर रही हैं। बृहस्पति को ज्योतिष में जीवकारक का पद दिया गया है। जब हम उनके बृहस्पति महादशा के लिए एक कुंडली बनाकर उसे पहले भाव में रखकर दशा विश्लेषण करते हैं, तो ये चौंका देने वाली बात है कि बृहस्पति उनके 9वें घर पर अपनी गुणकारी दृष्टि से उनको बच्ची होने का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनके 9वें भाव में शुक्र जो औरत का कारक है और बुध जो बच्चों का कारक है और राहु जो अपरंपरागत चीजों को दर्शाता है। अगर न्यूज चैनल्स की माने तो उनको एक बच्ची हुई है जो सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई है, जो पूरी तरह से ये स्पष्ट करता है। एक और दिलचस्प चीज जो उनकी कुंडली में विख्यात करने लायक है वो ये है कि उनके लग्न में ही चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ में है, जो ये दिखाता है कि वो खुद एक बहुत ही अच्छी माँ बनेंगी, क्योंकि चंद्रमा ज्योतिष में माँ का कारक है और उनके पहले भाव में जो स्वयं को दर्शाता है, जिससे ये पता चलता है कि उनके लिए माँ बनना बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर उनके परिवार में बढ़ोतरी के बारे में बात करी जाए तो वो जल्द ही अपनी शनि की महादशा में प्रवेश करने वाली हैं, जो उनके 5वें घर का मालिक है। तो उनके अपने परिवार को बढ़ाने की संभावना है और इस बार ऐसा भी हो सकता है कि उनका अगला बच्चा एक पुत्र हो, क्योंकि उनके 5वें भाव में मंगल और सूर्य जैसे ग्रह हैं जो पुरुष ऊर्जा के कारक हैं। मैं प्रियंका चोपड़ा को हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगी उनकी बच्ची के जन्म के लिए और प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द ही ठीक होके अपने घर आएं। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ आज अच्छा जानने को मिला, और अगर ऐसा है तो मैं आपसे विनती करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं आप तक ऐसी और भी ज्योतिष की अनेक वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद मेरा सहयोग करने के लिए। So, today's video is going to be an in-depth astrological analysis into why Priyanka Chopra's child was born through surrogacy. A disclaimer that I want to give before starting this video is that however Priyanka wished to have her child is her decision, and I will not be bashing her choice of how she wishes to become a mother in this video. So I would really appreciate that if you leave a comment on this video for it to not be derogatory towards anyone's journey to motherhood. Thank you so much for supporting me generously. Please keep doing so by liking the videos and subscribing to the channel. Now, let's start with the video. The first thing that we need to take a look at is her D1 or Lagna chart. This can simply also be called her birth chart. The principle of checking childbirth in a person's birth chart has to be evaluated by looking at their 5th house, because it is this house that signifies children. Upon looking at her chart, we see that she has 2 planets conjunct in the 5th house, which are Saturn and Mars. By adopting the planetary principle of friend or enemy planets, we see that Saturn is an enemy planet to Mars and vice versa. This simply means that Saturn gets agitated being placed with Mars and does not give favorable results in this conjunction. We can also derive this by understanding that Saturn in Aries, which is a sign ruled by Mars, is in its debilitated position, so it again reiterates the same fact. Now, when Saturn as a planet that brings challenges and grievances gets placed in the 5th house of children, it shows struggle of not being able to conceive her child naturally or being delayed in this process, causing possible complications based on her age, as Saturn matures at the age of 36 years, after which it starts to loosen its noose on you. To confirm this challenge regarding childbirth for her, we also check her Navamsa or D9 chart next. This chart is basically one of the divisional charts that gives us a microscopic view dissecting her birth chart for greater clarity. So upon checking the 5th house of her Navamsa, we notice that in here too she has a conjunction of 2 planets, and these are enemy planets to each other, being Saturn and Sun.
This reinforces and solidifies our understanding of her chart from the point of view of childbirth, being a difficult prospect for her as her karmic baggage that is shown by Saturn is firmly placed in the fifth house of both her Lagna and Navamsa chart, or simply her main birth chart and a divisional chart. Now, even after all these difficulties in childbirth, the question that can arise is how did she then get blessed with a child, even if it had to be through surrogacy? That's where the technicalities come in. So, her ascendant sign in her birth chart is Taurus, for which the signs that are ruled by Saturn, that is Capricorn and Aquarius, fall in the ninth and the 10th house. And this planet that is ruling the ninth and the 10th house has been placed in the fifth house of her chart. The planet Saturn is a Yogakarka planet for Taurus ascendants. What this means is that being the lord of a Trikon and Kendra house, as depicted on the screen, it gives a highly benefic result. And also in her chart, it goes into another Trikon house, making its impact even more beneficial through yogas. So from this we understand that even though she has some struggles relating to childbirth, yet it does not stop her from becoming a mother as Saturn blesses her chart. Another notable thing here is that these planets, Saturn and Mars, are placed in the sign of Virgo as denoted by the number 6 for the sixth zodiac sign of Virgo. Now, this has a lot to do with a person's health, and as we have heard, unfortunately, her child has been born prematurely, showing us how this difficult energy in her chart is manifesting for her child right now. The thing that confirms the presence of the probability of childbirth can also be seen through the dashas that she is currently running through, and in her case, is the Jupiter Mahadasha. In Vedic astrology, Jupiter is called a Jivakarka, which means giver of life. Already, we can see that the chances of childbirth are getting amplified in this period. On top of that, when we make a Jupiter Dasha chart for her, by making her Libra Jupiter as an ascendant in the first house, we see that it is aspecting her ninth house, which has 3 planets conjunct in it, being Venus, Mercury, and Rahu. And this part literally gives me chills because Venus is a planet that denotes the female energy in astrology, and Mercury denotes a child's energy, while Rahu shows an unconventional bent to things, which all points to one direction, being that birth to a girl child who was born through the unconventional method of surrogacy. Another interesting point to be noted here is that in her birth chart, her moon is on her ascendant in the first house in the sign of Taurus, which is in its exaltation or the best sign for the moon to be in. Moon signifies mother in astrology, and it shows us how important it is for her to be a mother and what a wonderful mother she would be to her baby. So, when it comes to the future of her family expansion, we can see that she is soon about to enter her Saturn Mahadasha, which is the lord of the fifth house in her chart, which signifies children. So there is a huge probability for her attempting to expand her family by inclusion of another child during that period. And also, as in both of her charts, be it the D1 or the D9 chart, the presence of Mars and Sun are there, which are both masculine energy planets being conjunct with Saturn. Next child that she could have could possibly be a boy. So, I would like to wish Priyanka Chopra hearty congratulations on the birth of her child, and I wish for her to have a speedy recovery to be able to arrive home soon. With all these observations, I come to the end of this video. I hope you took some value out of this video, and if you liked it, then please support the channel by subscribing and liking. Thank you, and see you with the next video soon. Until then, take care you all.